Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover some non-fiction topics. नॉन-फिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार इग्नोर हो जाता है। हम लोग इतने बिजी रहते हैं फिक्शन, पोएट्री, प्लेस कवर करने में, नॉन-फिक्शन को थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं। अभी ऐसा नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट ईयर करवाए थे और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 एंड दिस इज गोइंग टू बी वीडियो नंबर 11। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 11। पिक अ पेन एंड पेपर और अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो प्रिपरेशन अपने आप अच्छे से होगी। सभी रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पिक करके इन वीडियोस को बनाया गया है। दिस इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे बाद में बताइएगा भी कि आपके खुद कितने मार्क्स आए इन सभी क्वेश्चंस में से। आपको कितने आते थे? 10 क्वेश्चंस करेंगे हम आज। तो ऑथर ऑफ द एसे सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट्स इज Silly Novels by Lady Novelist. This is the name of the essay. The correct answer is option A, George Eliot. Silly Novels by Lady Novelist is an essay by George Eliot published anonymously. उस वक्त नाम लेना पाप माना जाता था ना, तो anonymously उन्होंने पब्लिश किया था in the year 1856 और बाद में वो pseudonym यूज करके लिखने लगी थी। उनका रियल नाम मैरी एन एवेंस। Next question, who is the author of the collection The Celtic Twilight? The correct answer is option C, W.B. Yeats. Celtic Twilight जो कि 1893 का एक टेक्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ एसेज है। इट वॉज W.B. Yeats फर्स्ट एफर्ट टूवर्ड्स डिसेंट एंड प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी और उन्होंने ख़त्म किया था 1898 में। 1898 द वेरी पॉपुलर ईयर व्हेन ही मेट ऑगस्टा लेडी ग्रेगरी, जिसके साथ मिलकर उन्होंने आयरलैंड में थिएटर्स को रिवाइव किया था। क्वेश्चन 103, इन हर एसे प्रोफेशंस फॉर विमेन वर्जीनिया वुल्फ फाइंड्स एन एनालॉजी between the act of writing and what? Driving a motor car, riding a horse, fishing or gardening. Professions for women is an abbreviated version of speech Virginia Woolf delivered before a branch of National Societies for Women's Service in January 1931. 1931 की बात है जब उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी। And she said, like a fisherman, the girl wanted something. So which was to write and she had to try to go after it, but there was many things in her way. तो एक लड़की एक फिशरमैन की तरह बहुत कुछ अचीव करना चाहती है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं रास्ते में। तो किससे कंपेयर किया गया? ऑप्शन सी, फिशिंग से। Next question, question 104. This is a popular question. Eliot uses the term objective correlative in his essay. Which one? Metaphysical Poets, Hamlet, Tradition and Individual Talent, or Dante? Option B, Hamlet. Actually, it is not the full name. The full name is Hamlet and His Problems. This is the essay written by T.S. Eliot in 1919, in which he talks about the objectives of the character Hamlet. Eliot popularized the concept of objective correlative, a mechanism which used to evoke emotion in the audience when they are watching certain play. The essay is also an example of Eliot's use of what became to be known as new criticism. Next question 105. The theological treatise Ecclesiastical Polity was written by which one? Which writer? The correct answer is option D, Richard Hooker. Richard Hooker, who was a very influential English clergyman and theologian, best known for the work of the Laws of Ecclesiastical Polity. This is a monumental work of English theology, philosophy and religion. Matthew Arnold, the great critic, इनको तो हम सब जानते ही हैं. What did Matthew Arnold imply by the term Hebraism in his Culture and Anarchy? By using the term Hebraism, Arnold did not imply any kind of intellectual autonomy, any rational or logical outlook, or any practical aptitude, practical pragmatic attitude, but rather he was after moral rigor and ethical behavior. So option A, moral education, is the right one. Next question 107. The journal Scrutiny was founded in 1932 by which writer? Was it I.A. Richards, F.R. Lewis, Clint Brooks और J.C. Ransom? ये सभी राइटर्स आप देखिए न्यू क्रिटिसिज्म से ही एसोसिएटेड हैं. Scrutiny, a quarterly review, was a literature
periodical founded in 1932 by L.C. Knights and F.R. Lewis. F.R. Lewis के साथ मिलकर, मे बी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि F.R. Lewis के साथ और कौन थे जिन्होंने फाउंड किया था. योर आंसर शुड बी L.C. Knight. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. Question 108. Who among the following were revaluing the masses as sources and subjects of literature? The correct answer, option A. Both Richard Hoggart and Raymond Williams were the key figures in the development of cultural studies as a discipline, and both had a great keen particular interest in the ways in which the masses, the people, the working class specifically, are represented in literature and other media forms. So option A here is the right answer. Question 109. Who among the following theorists has written on narrative empathy? Narrative empathy क्या मतलब है इसका? It means a character oriented emotional response and perceptive taking. Reader forms, mental representation of the emotions of the character. Suzanne Cain, option B here is the right answer. A prominent literary theorist and scholar known for her work on narrative empathy. Suzanne Cain, narrative empathy. Narrative empathy, you get involved with so much with the character that you create a character oriented emotional approach towards a particular text or any writing. Question 110. Who among the following first framed theory of general hermeneutics? Hermeneutics समझते हैं पहले. This is the branch of knowledge that deals with the interpretation specifically of Bible or literary text in biblical form. Friedrich Schleiermacher, option C is the right answer. Considered to be the founder of modern hermeneutics, the theory and methodology of interpretation of biblical text, his work in 18th or you can say early 19th century is considered to be the groundwork for later developments in the same field of hermeneutics. एक वीडियो और कवर करेंगे हम लोग नॉन फिक्शन का ही, और पूरे प्रीवियस 10 वीडियोस को भी आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए. आई विल गिव द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन. 10 मोर क्वेश्चंस आर कमिंग अप वेरी सून. पेन एंड पेपर लेकर ही बैठिएगा और हर चीज के नोट्स आपको बनाने हैं हैंड रिटन. दैट ऑलवेज शुड बी योर स्ट्रैटेजी. I hope you took note of all the questions that we covered today and you scored well too. जितना भी स्कोर आपका हुआ है प्लीज मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बता दीजिए. That way I'll be encouraged to teach you more and I'll come to know in which direction actually I need to teach. You may join the classes to cover all the topics for master's entrance in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.